Hello all, welcome to my channel. In this subject of engineering graphics, we are studying isometric projections. In the earlier videos on isometric projections, I have explained the basics of isometric. I have taken numericals where I have thoroughly explained how to draw isometric projections of object. In this video, I will explain how to draw slot on sloping surface. The sloping surface may be rectangular or circular. So let's start. No, this is L shape. L shape. So all of you understand ये actual object भी L shape ही बनेगा और इधर का ये जो surface है this will be semi circular. Okay, semi circular. इतना subject सबको समझा होगा. There are three things which I have to explain you in this. The first thing is this hexagon. The second thing is the angle over here. You can see there is angle here. And the third thing that I have to explain is slot. Slot on स्लोपिंग सरफेस. ये उस दिन हमने किया था, इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लो भी इस बार. एक और समय इसके बाद में वो भी मैं बताऊंगा. सो एक्सेप्ट दिस थ्री थिंग्स, इफ इट इज जस्ट लाइक दिस, if it is just like this and then the top view is like this, okay, you know, all of you know how will you draw. You will draw a L shape object. This all of you will be able to do. And then this like this. And if this is a circular hole, it is easy for you. But this is not a circular hole. This is a hexagon. You can see regular hexagon. Now, since it is a regular hexagon, how will you draw it here? यहाँ पे कैसे draw करोगे? अभी वो समझ लो. जितना मैंने बताया शायद उतना सबको समझा होगा. Except these three things: hexagon, ये वाला angle और slot on sloping surface. बाकी सबको समझा होगा ये कैसे draw करना है. Okay. Now first I will explain for this hexagon. Okay. Now, how will you draw a hexagon here? Okay, first forget about hexagon. Had it been rectangular hole, अगर ये rectangular hole रहता था तो कैसे रहता था? Then it would have been like this. Somewhere here I will draw. So I will just draw the top view. And there would have been a rectangular hole like this. Then what you would have done? You would have taken this point and this point and taken the distances, and you would have drawn it like this. You would have taken this point, then taken the distances, okay, this four distances, and then you would have drawn it like this, correct? So I don't think there is any issue to any student in this. A rectangular hole as it is, you would have drawn it. But right now it is not rectangular. It is what? It is a hexagon. So what is so much about hexagon? Because there are some lines which are non-isometric lines. So that is important. Hexagon is not important here. The non-isometric lines are creating some trouble. Okay, and we need to take care of these non-isometric lines. So what will we do? We'll actually draw this hexagon here like this. Okay, we'll draw this hexagon here, and I will name this A, B, C, D, E, and F. Okay, so that naming I will write here also. A, this will be A, B, C, D, E, and F. Okay, so where is this A coming here? A is coming here. Understand? A, then B is coming here, C, D, E, and F. Is there any student who is having any confusion on naming of this hexagon? जैसे यहाँ पे नेम था वैसे यहाँ पे किया मैंने और सेम यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया. Hope this is clear to all of you, the naming. Yes, sir, एक डाउट था सर. सर ये हम लोग ने रेगुलर हेक्सागन ही बनाया ना सर ये? हाँ, रेगुलर हेक्सागन जैसे हेक्सागन बना. हाँ, वो बराबर बना नहीं होगा, वो डायमेंशंस बराबर नहीं होगा. इट इज रेगुलर हेक्सागन जैसे हम यूजुअली ड्रॉ करते हैं. ठीक है. नाउ वेयर इज दिस ए कमिंग? सी, ए इज कमिंग हियर. ए इज कमिंग हियर मतलब इस सेंटर लाइन से कुछ डिस्टेंस पे ए आ रहा है. सो दिस इज सेंटर लाइन एंड दिस इज सम डिस्टेंस. सो इफ आई से दिस इज O and this is also O, I can take this distance in compass OA. OA मुझे मिल गया A point. Clear to all of you?
Similarly, I will take OD distance in compass and mark it here. So I will get this point D. Now I got point A and point D, and point O was already known, it is center. Now how to obtain this point F and E? F and E. Now in order to obtain point F and E, I will mark 2 points. Suppose this is P and this is Q. Which is P? This is P. This is Q. So I am repeating ये dots जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये तुम्हारे, it's only for your understanding. You should not give these dots. Okay. Now O to P, O to P, O to P. I will take the distance in compass, and O to P. Once I get the distance in compass, I will draw a line here, O to P. And another line is O to Q. O to Q will come here, O to Q. So on this line I get P, on this line I get Q. Clear? Now from P to F, P to F I will take distance in compass, and P to F. So this is P, so this is F. Again P to E. Now these distances are all equal. P to, see I will write here, F to E equal to P to E equal to B to Q equal to Q to C. So all these four distances are equal. So once you take the distance, you can just mark it here. This is E, and on this what we have is C, and here what we have is B. That's it. We are done, and then we'll join this here like this, this, and the sequence is completed. Any doubt to anyone? सर वो 120 सर डिग्री पे कंफ्यूज रहेगा हो गया ना, सर, एक F और और बार E? एक्सप्लेन करो ना। हाँ 120 डिग्री क्या? सर ये हेक्सागोन है तो 120 डिग्री पे रहेंगे ना वो F और E, मतलब देखो ये हेक्सागोन हमको ड्रॉ करना है. ओके, हेक्सागोन का इंटरनल एंगल कितना है पता है तुमको? हाँ सर, कितना है? मतलब किसका बोल रहे हो सर आप? इंटरनल 120 एंगल ऑफ डिग्री पे रहते हेक्सागोन. हैं ना सर? हाँ इंटरनल एंगल इज 120. हाँ ठीक है 120। ठीक है. तो अभी वो एंगल भूल जाओ, अभी भूल जाओ. ये 120 डिग्री पे इंटरनल एंगल लेके यू हैव ड्रॉन द हेक्सागोन. ओके, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इसको अभी भूल जाओ, एंगल्स भूल जाओ. Okay, once you have drawn the hexagon, forget about the angle. तो 120 डिग्री है, 100 है, 60 है, whatever it is. अभी हमको एंगल से कुछ लेना देना नहीं है. एंगल तब तक इंपॉर्टेंट था जब तक ये हेक्सागोन बना नहीं था. हेक्सागोन बन गया, एंगल भूल जाओ. ठीक है, अभी पे अटेंशन हियर. दिस पॉइंट P to E and P to F, is this distance equal? Is this distance equal? P to F Yes, and sir. P to E. Okay, is this distance Q to B and Q to C equal? Yes sir. Yes, Okay, sir. so 1, 2, 3 and 4, these four distances are equal. I have written here. If you draw it properly by taking the scale, F P, P E, Q B, Q C, all these four distances will be equal. Okay, now once you draw this here, ये नेमिंग करना नहीं है तुमको, कहीं पे भी नेमिंग करना नहीं है. मैं नेमिंग क्यों कर रहा हूँ? जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज. यू जस्ट हैव टू ड्रॉ इट एज इट इज. ओके, I have named this so that I can, ये point मैं ये point बोलूंगा तो ये point मतलब कौन सा point? This point you will not understand. That's why I have named it. So if I say F is this point. Okay, that's why I have named it. So you don't have to name it in the examination or while drawing the isometric. Okay, now this is the surface that you will draw, and on this surface you have to draw this hexagon. Okay, so first you will obtain the center line, this center line and this center line. Okay, so this is at 55 mm. And this is at what distance? So total is how much? 70. So this is 35 from here, 35 from here. So here these two center lines you will get. Okay, once you get the center line, just you have to this center line 1 2, this center line or this center line, this and this. So you must be seeing that ये सीधा है, ये तिरछा है, तो इसी को तो इंक्लाइन करेंगे ना. ये देखो, ये ऐसा क्वेश्चन में तो आंसर में कैसे मिलेगा? थोड़ा इंक्लाइन मिलेगा ना. तो इसी को इंक्लाइन किया है यहाँ पर, इंक्लाइन किया. सो ए पॉइंट इज हियर on this center line. We have point O and point A. So point O was already known. Point A distance mark कर सकते हैं हम कंपास से. इसी तरह O point तो ऑलरेडी है. D point हम मार्क कर सकते हैं कंपास से डिस्टेंस लेके. तो A मिल गया, D मिल गया. अभी दो पॉइंट्स E और F ये लाइन पे आएगा. सपोज मैंने इस लाइन को नाम दिया P और एक लाइन है और उसको नाम दिया Q.
So once I get the line P and line Q, I can mark this point E, F and CB on these lines. Okay, so this is the line P. ये P वाला लाइन है या फिर ये पॉइंट P है. ये कितना डिस्टेंस पे O से, इतना डिस्टेंस कंपास में ले लो O से P तक. O से P तक एक डिस्टेंस कंपास में लिया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया. फिर O से Q तक डिस्टेंस लिया. नो दिस O से P एंड O से Q, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल. सो O to P on this side, O to Q on this side. यहाँ पे दिख नहीं रहा है इक्वल, बट इट इज इक्वल. So once you get this P and Q point, F, E, B, C, F, E, B, C can be marked. Once all the points are marked, you just join them and you will get a hexagon. Clear? सर बट ऐसा बोल सकते हैं कि वो मिड पॉइंट है ना सर, ई और एफ का जो मिड पॉइंट पास थ्रू हो रहा है सर. Yes, E और F का ये मिड पॉइंट है P, करेक्ट. B और C का मिड पॉइंट है Q. सर वो नहीं समझा सर, हम लोग ने जो P और Q की लाइंस ड्रॉ की है सर, ठीक है. C और E कैसा मिला सर? हाँ, ये पॉइंट O है, ठीक है. A मिल गया, B, D मिल गया. इसके बाद में कितने डिस्टेंस पे EF पॉइंट कितना डिस्टेंस पे आ रहा है? ये डिस्टेंस कितना है? ये कहाँ से पता चलेगा डिस्टेंस? 35 ना सर. 35 नहीं, डायमेंशंस भूल जाओ. मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे एंगल्स भूल गए ना यहाँ पर, डायमेंशंस भी भूल जाओ. फॉरगेट अबाउट डायमेंशंस. ये हेक्सागोन जितने डायमेंशन का, ये 35 नहीं रहेगा सब, ये 35 नहीं रहेगा, क्योंकि इसको इंक्लाइन किया है. इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, इफ यू आर इंक्लाइनिंग अ सर्कल यू विल सी इट एज इलिप्स. अब जब इलिप्स दिखेगा मतलब डायमेंशंस चेंज हो रहा है. उसी तरह ये हेक्सागोन है, इसको हम इंक्लाइन कर रहे हैं तो हेक्सागोन दिखेगा, लेकिन वो रेगुलर हेक्सागोन नहीं दिखेगा 35/35 का, कुछ डायमेंशंस चेंज हो जाएगा. So once you have constructed this, forget about the dimensions. Am I clear to all of you? You just have to mark the points on this and take those distances here and mark the points on this. Dimensions से नहीं, because these are non-isometric lines. These are non-isometric lines. Okay. Now if you think about this distance, O से P का distance, O से P का distance, ठीक है, ये distance ये same रहेगा, because this is isometric line and this is also isometric line. But don't keep the confusion in your mind, कौन सा isometric है, कौन सा isometric नहीं है, फिर ये distance actual जितना है उतना distance लेते हैं. Forget about that. Just take these distances of all the points and just reproduce it here as it is drawn here. Tell me if you have still any doubt left in your mind. सर प्लीज वो बता सकते हो C और E कैसा मिला सर? मतलब कौन सा C? ये यहाँ का C, ये यहाँ का C? यहाँ नहीं का नहीं वो यहाँ नहीं का उधर का. हाँ हाँ. ये C कैसे मिला? ठीक है, ये C कैसे मिला समझा? ये C पॉइंट जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये कैसे मिला समझा सबको? हाँ वो तो सर फिगर में ही है ना, मतलब हेक्सागन ही है ना तब में. हेक्सागोन है, ठीक है. अब ये C पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है? इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है? मतलब OQ डिस्टेंस पे है, करेक्ट? यस सर. मतलब अभी ये OQ डिस्टेंस में क्या करूंगा, कंपास में लूंगा, O डिस्टेंस से O पे रख के यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है उस पे आर्क कट करूंगा, तो मुझे एक डिस्टेंस मिल गया Q. यहाँ पर ये Q पॉइंट कहाँ पे मिला? Just a minute. This point is Q. This point is Q, करेक्ट? यस सर. अभी Q से C कितना नीचे है, इतना डिस्टेंस कंपास में ले लेंगे. Q से C Q पे रखेंगे, और ये लाइन क्यों ड्रॉ किया मैंने? लाइन इसलिए ड्रॉ किया बिकॉज दिस कहाँ पे मार्क करूंगा मैं? ये पूरा आर्क आ जाएगा ना, सो इट हैज टू हैव सम बाउंड्री. इसलिए आई हैव ड्रॉन दिस लाइन पैरेलल टू दिस एक्सिस लाइन. इसी लाइन को उस पे यहाँ पे E आ गया, तो ये B आ गया, इसी तरह यहाँ पे P रख के F आ गया और E आ गया. यस सर, गॉट इट सर. सेम गोस फॉर F and E. Yes, yes, समझा yes. सर. थैंक यू सर. Okay, so I think this angle is clear to all of you. Okay, angle part is clear to all of you. Similarly, this angle can be done. Now understand how to draw the slot on the sloping surface. So which is the sloping surface? This is the sloping surface. Now before you understand slot on sloping surface, first to understand slot on rectangular surface. अगर sloping surface नहीं है तो slot कैसे रहेगा वो समझ लो पहले. Let me draw the front view and top view. The front view goes like this.
and the top view goes like this. I am not drawing the circular surface there. This is just for explanation. And say this is a slot here. Okay, so in order to draw the slot, I will draw it here like this. Okay, so this you can see is a slot. Where is this slot? Slot is on the rectangular surface. So how will you draw the 3D of this? If you draw the 3D of this, then the 3D of this 3D or isometric, whatever you say, will be like this. I am drawing it to the reduced scale just for the purpose of understanding. I have to draw this. And to complete this slot, I will draw a vertical line from here. Okay. So this should be understood by all of you. No one should have any doubt in this. Now, when the slot is on rectangular surface, it can be easily drawn. We just take this measurement from the front view or top view and draw the slot. But now this slot is not on the rectangular surface; it is on the inclined surface. So what does it? What difference does it makes? It makes the difference in the sense that the slot is on inclined surface, but the distance given is horizontal. Are we given this distance? Are we given this distance? Just a minute. Are we given this distance? Distance between these two lines? No, we are given this distance, which is horizontal, and we are drawing it by considering this inclined distance. So this is the difference. Here, see, which is the distance given to us? We know this distance. We know this distance. So this is horizontal or isometric, and this is also horizontal or isometric. Okay, so there is no issue in this case. But whereas in this case, the distance given is which? The distance given is this horizontal. Okay, how? See, this is 12. 12 is what? Horizontal. Okay, horizontal, or I can say isometric, not non-isometric. Yeah, horizontal या vertical line को inclined parallel distance है 12. Similarly, this 25 is parallel, but then we have to draw this slot at what distance? Is it at 12? No, it is not at 12. Is this 12? Is this 12? No, this is not 12. I don't know how much is it. So in that case, the procedure is what I am going to explain you. So is this clear to you? ये क्यों ये important है, ये समझा सबको? डिस्टेंस दिया हुआ वो हॉरिजॉन्टल है, इंक्लाइंड सरफेस जो है ये, इसका डिस्टेंस कितना है वो नहीं दिया है हमको, इसीलिए ये प्रोसीजर जो अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमको करना पड़ेगा. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? क्यों करना पड़ेगा? यस सर, क्लियर सर. यस सर, क्लियर. यस सर. सर एक और डाउट था सर, वो हाँ. वहाँ पे 100 दिया है ना मेजरमेंट हाइट उसकी, हाँ, और वो वहाँ पे 20 दिया है ऊपर, तो 100 हाँ. माइनस 20 करके वहाँ से 80 से वहाँ ज्वाइन करके नहीं निकाल सकते? हाँ सर, एक डिफरेंस तो मिल जाएगा ना सर लाइंस में, और फिर इंक्लाइन लाइन में आ जाएगी फिर. हाँ सर. ठीक है, मतलब तुम ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे या तो ऐसा ड्रॉ करोगे, करेक्ट? हाँ, या फिर वैसा तो फिर वही करना है ना हमको. दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. लेकिन what is important here is this distance is not known, then you will have to either draw it and measure the distance, or you will have to use trigonometry to find this distance, how much is this, correct? हाँ सर. So what will you do? यहाँ पे देखो ऐसे ड्रॉ करेंगे. ये ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, ये बॉक्स ऐसे रहेगा. So I am not going to explain you this part now, hexagon वाला, मुझे सिर्फ यहाँ पे concentrate करना है. Okay, in this now how will you draw? How will you obtain this? See, understand again. This 60-60 वाला you will have to draw it. कैसे draw करेंगे? You will draw it actually. ये ऐसा, फिर ये angle 60 degree, फिर ये ऐसा. So if I name this A, B, C, D, E, F, and then how will you draw this here? A, B, ये डिस्टेंस कितना आएगा? इस लाइन पे कितना डिस्टेंस था उतना डिस्टेंस ये ड्रॉ करेंगे हम ऐसे. ठीक है. Now this has to be drawn. Now this is 100. This is 100. This is what we know, and at a distance of 25. At a distance of 25, that is, say here, this distance is suppose 25, and here what is the distance? This is the distance, and this is the line that we have to draw. मतलब ये ऑब्जेक्ट ऐसे हो जाएगा, करेक्ट?
Now the slot which I have drawn is drawn on which plane? See, understand, this slot I have drawn is drawn on which plane? I will name the plane M N O P. देखो ये plane पे मैंने slot draw किया है अभी M N O P. Whereas I have to draw the slot on which plane? M N R S. इस plane पे मुझे slot draw करना है. कौन से plane पे draw करना है? I want this slot to be drawn on M N R S. But right now I have drawn it on M N O P. Is this thing clear to all of you? So for that, what will you do now? You will join this line. Now I am using green color now for this construction. Join this and draw how much distance? 20 mm down, and then join this line. ठीक है, ये ट्रायंगल समझा? ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? 20, एज यू सेड. ओके, 20 ही रहेगा. ये तो 100 है, और ये डिस्टेंस कितना है हॉरिजॉन्टल लाइन का? इस लाइन का लेंथ कितना है? 25. Now I got this. Now on this, in order to draw this slot, what will we do? This point at a distance of how much? 12 mm. So I will draw another line at distance of 12 mm. ये कितना हो गया? 12 mm. And join it like this. Now wherever this point meets here, I will draw a vertical line from here. एक vertical line draw करूँगा. ये 12 mm का line draw किया. ये 12 mm का एक पूरा plane बना दिया मैंने. I have constructed this plane of 12 mm. मतलब this is plane number 1, this one is plane number 2, and this one is plane number 3. So I have constructed 3 plane. पहले सबसे पीछे वाला है, दूसरा 12 mm पर है, और तीसरा 25 mm पर है. Now this plane which is at 12 mm, on this I will draw a vertical line from here. Vertical line. Can you see this vertical line? So where it meets this line, this point. Now from here, I will draw the slot. So the slot which I have drawn there is not correct, and I need to erase it. This black color जो पहले मैंने draw किया था, कौन से plane पे draw किया था? वो गलत plane पे draw किया था. Okay, MNOP plane पे draw किया था. Whereas I want it to be drawn on another plane. Which one I have not used? Blue I have not used. So this point, once I obtain this point, then like this I will draw. This is the slot. Okay, so कितना डिस्टेंस नीचे आ गया? ये देखो, ये इतना ही डिस्टेंस नीचे आया. इतना डिस्टेंस ये कहाँ से मिला हमको? यहाँ से मिला. इतना डिस्टेंस नीचे आना, और ये स्लॉट ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे. अभी नाउ दिस ब्लू कलर स्लॉट इज ड्रॉन ऑन विच प्लेन? MNRS. MNRS इस प्लेन पे ड्रॉ किया है, जबकि पहले कहाँ पे ड्रॉ किया था? वो MNOP उस प्लेन पे ड्रॉ किया था. Okay, so when you actually draw this, you will come to know. I am repeating the procedure once again. First, you draw 3 planes. एक plane number 1 सबसे पीछे वाला, एक plane number 2 at 12 mm, and plane number 3 at 25 mm. Then you construct this black color MS line, MS, NR and SR. इतना ड्रॉ कर सकते हैं. फिर ये SR का मिड पॉइंट ये आया, और ये MN का मिड पॉइंट ये आया. इससे ये ग्रीन कलर का ड्राइंग किया, लाइन ड्रॉ किया. ओके, नो इसके बाद में यहाँ से 12 mm, ये 12 mm का जो प्लेन है, वहां से ड्रॉप अ लाइन परपेंडिकुलर ऑन दिस इंक्लाइंड लाइन. ड्रॉप अ लाइन परपेंडिकुलर ऑन दिस इंक्लाइंड लाइन. सो यू गेट दिस पॉइंट. विच पॉइंट? यू विल गेट दिस पॉइंट. एंड ऑन दिस पॉइंट you have to draw the slot. तो कैसे ड्रॉ करेंगे? See, take this much distance in compass and cut an arc here. Take this much distance in compass and cut an. So this is F and this is E, and join it. That's it. And this is B and this is C. So this is the slot now on inclined surface, and this is the slot on rectangular surface. ये sloping surface पे slot है. Okay, तो प्रोसीजर में इतना ही करना है. ये एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करना है. इस लाइन का इंक्लिनेशन कितना होगा? इक्वल टू MS इक्वल टू NR. इनको पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे. फिर उसके बाद में 12 mm पे 12 mm क्यों? क्योंकि 12 mm पे तो स्लॉट खत्म हो रहा है ना, इसी पे तो खत्म हो रहा है 12 mm पे, उसके आगे नहीं है. सो 12 mm पे वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉप करेंगे
टॉप व्यू से नीचे तो जहां पर भी ये इंक्लाइन लाइन को मिलता है वहां पे स्लॉट आएगा हमारा. सो दिस इज द स्लॉट. This is the slot now. And then just draw a vertical line from here to this vertical line to look it as a slot. So hope this is clear to all of you. सर एक डाउट था सर लास्ट. हाँ. सर ये जो EF लाइन है ना सर, हम इसको 12 mm से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और फिर एंगल ABC को 60 डिग्री लेके अगर हमने E पे ऐसा ड्रॉ किया तो हमको E मिल जाएगा ना पॉइंट. ये 12 mm है. एक 12 mm का लाइन ड्रॉ करेंगे रफ यहाँ पे. हाँ. एंगल ABE डिग्री ड्रॉ करेंगे जहाँ पर वो मीट हो जाएगा वो पॉइंट E हो जाएगा और ये यहाँ से 60 डिग्री पे F पॉइंट मिलेगा. हाँ है ना सर, बराबर है ना. करेक्ट. ठीक है. सो जस्ट अ मिनट. ये जो तुम पूछ रहे हो, सी यू हैव टू एक्चुअली ड्रॉ दिस. ये डिस्टेंस कितना है x. ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ किया है. ठीक है, 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ किया है तो हमको ये पता नहीं है कि डिस्टेंस कितना है. तो यू हैव टू एक्चुअली ड्रॉ दिस. इतना ड्रॉ करके फिर वो यहाँ पे इट हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड. ये डिस्टेंसेस. दिस इज द क्वेश्चन. This part you can draw. Okay, this is a semicircular part starting from here to here, and then these are the straight lines, and then there is a circle in this. But this you will not draw on the extreme left face, that is the face towards the observer, but you will go inside by what distance? By this distance, and then you will draw it here. The only thing is when you are drawing this circle or ellipse, those construction lines will come on this surface also. Okay, it will come on this surface. Okay, so no issue, let the construction line come. Okay, your solution should look like this. हाँ सर ये. हाँ सर इसमें जो कर्व है ना सर पीछे का सर, ये नहीं ये तो सर सेमी सर्कल ये तो बना लूंगा ना सर उसके पीछे वाला, ये वाला पीछे जो अंदर का है. नहीं सर, ये पीछे जो है वो. हाँ ये वाला सर. उसको कैसे बनाते हैं? हाँ सर वही. See, once you do this, you will draw a rhombus here, correct? And in this rhombus, you know now this semicircle will come something like this, correct? Now, this has to be drawn where? Like this, in this direction. Okay, by what distance? This distance is 20. Okay, you can see this is 20. Now for that you need to identify the centers. Okay, so maybe this is drawn by this center. So when this is drawn, then it will be like this and like this. And which centers will be used to draw this? Maybe these two centers, this center is used to draw this portion. Okay, this center is used to draw this portion. Then what will you do is you will extend this center in which direction? In this direction. Okay, extend this center in this direction. By what distance? 20. Okay, so you will get a center, new center here. And once you get a new center, see, look at this line in the question. Look at this line in the question. So from here to here, this is a straight line, correct? This is a straight line. So that line, here also you would have drawn this straight line from here to here. And here also you will draw the straight line like this. Now with this center, you draw arc like this. Let it come whatever way it want to come. It will come something like this. Once you do this, then what you will do is you will draw a line parallel to this line. You will move the roller in this direction and you will draw a line tangent to this. Okay, so then this whatever is extra like this line, this thing, that extra can be removed. Okay, so once again I will repeat. Find the center which is to be extended in which direction? Right now in this direction you find the center. Now this center you have extended. Now with the same radius, which was earlier the radius, with the same radius again draw an arc. So when you draw the arc, it will come something like this. Arc. Then from this arc, the first arc that you have drawn, draw a line tangent
tangent, parallel to see, it is parallel to which line? It is parallel to this line, like this. Draw a line parallel. Okay, once it is drawn parallel, then whatever extra you have drawn, that thing can be erased. Like this. Whatever is extra, that can be erased. And that's it. That you will get. हाँ सर समझा सर और फिर सर सर वो नीचे का जो सर हम वो सर्कल के उधर वाला सर ये अंदर वाला हाँ सर वो भी सेम सर same procedure. But what you have to extend, you will have to see which is the center point that can be extended. वो 4 सेंटर पॉइंट मिलेंगे, उसमें से कौन सा सेंटर पॉइंट एक्सटेंड करना है उसको देखना है तुमको. And this circle also, when you have drawn this circle also, it would have come like this. ये ellipse ऐसे आया होगा, correct? So you don't draw this portion of the ellipse. इसको ड्रॉ नहीं करना है. ये जो पोर्शन है आंसर में देखो, ये जो पोर्शन है ellipse का, this portion, okay? So if you draw complete ellipse, it will be drawn like this. Then there are two ways. Either you erase this afterwards, or while drawing only you remember that it has to be drawn till this point and this point. So then there is no need to erase it. उससे पहले सर वो सर जो अंदर वाला सर्कल के बारे में बात कर रहे थे ना सर हम हाँ, उसको सर कितना पीछे लेंगे सर 40/40 पीछे लेंगे सर वो सेंटर से नहीं, और तभी एक बात बताओ मुझे, वो जो सर्कल है अभी तुमने जो ड्रॉ किया वो ये ड्रॉ किया, करेक्ट? ये भी ड्रॉ किया, दिस वन. हाँ सर अभी किधर ड्रॉ करना है? यहाँ पे ड्रॉ करना है. ये डिस्टेंस कितना है? 20. तो 20 से उस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है? ओके सर थैंक यू सर सॉरी. ठीक है. नाउ दिस हाउ टू ड्रॉ दिस स्लॉट ऑन द स्लोपिंग सरफेस. ये स्लॉट ड्रॉ करने के लिए कैसे ड्रॉ करेंगे? तो व्हाट आई विल डू इज, मैं पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ. And here we are going to draw the slot. So I am drawing only that much portion, and before that this thing we have already completed. See, this is what we have done. ये हमने draw कर लिया इधर. This we have drawn. Now because I have to explain only that portion. Now from this point to this point also we have joined. This also we have joined. So if I draw a line like this, then this will be joined like this. Correct? I hope this is clear to all of you till here. Now this line, it will not be a complete line because you can see there is a gap here. So what I will do is I will draw only that portion, that much portion, that is 20 here and 20 here. And then from here I can draw this vertical line in downward direction. This and then this, and then this will go like this and this much. Okay, this much is done. I think this is clear to all of you. Till this point there should not be any issue. सर वो आपने 45 डिग्री का डिस्टेंस किया है ना सर? हाँ, ये डिस्टेंस. ओके, दिस डिस्टेंस यू हैव टू मेजर मतलब कंपास से मेजर करना है, स्केल से नहीं. ओके, यू हैव टू ड्रॉ दिस एक्चुअली ड्रॉ दिस. ड्रॉ करने के बाद ये डिस्टेंस देखो कितना है. यू डोंट हैव टू ड्रॉ द एंटायर स्केच, ओनली ड्रॉ दिस मच. हाउ विल यू ड्रॉ? ठीक है. नाउ आई हैव ड्रॉन दिस. इसमें से दिस इज हाउ मच? 35. कहाँ से 35 है? यहाँ से 35 पे ये डिस्टेंस मिल गया. ओके, ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है हमारा? 35. दिस इज 70. ओके, दिस इज 70. सो आई हैव कंस्ट्रक्टेड. अभी वी हैव टू ड्रॉ ओनली दिस मच. नो, दिस इज 35 मतलब ये पॉइंट हो गया. सो एक काम करता हूँ, थोड़ा और आगे लेके ड्रॉ करता हूँ, मतलब और कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा इसके आगे भी. लेट मी से दिस इज 35 यहाँ तक. ठीक है, तो 35 का ये पॉइंट कहाँ पे आएगा? हियर. नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन एट ऑफ 45 डिग्री. तो यहाँ से 45 डिग्री लो. ये एंगल कितना है? 45 डिग्री हो गया. और ये दिस इज डन. नाउ व्हाट इज इट दैट वी वांट दिस लाइन, this inclined line, then this. Now which distance we want? We want this distance. Okay, this distance, correct? No, this distance is not known to us, क्योंकि ये हमको पता नहीं है.
क्यों पता नहीं है? क्योंकि ये 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ किया है। ओके, तो मेजर करना है तो हम ट्रिग्नोमेट्री से कैलकुलेट भी कर सकते हैं या फिर मेजर कर सकते हैं। तो अपनी हमको ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज नहीं करना है। दिस इज diagrammatic representation. So here we cannot use trigonometry. So we have to measure it. So measure करने के लिए क्या करना पड़ेगा? Actually we'll have to replicate it like this. ऐसा पोर्शन यहाँ पे हमने ड्रॉ किया. Now measure this. How much is this? ये जितना भी आता है उतना ये वर्टिकल डिस्टेंस होगा. Any doubt in this? क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर सर। ठीक है, नाउ पे अटेंशन फॉर दिस स्लॉट। ठीक है, ये पोर्शन कैसे ड्रॉ करेंगे? नाउ अंडरस्टैंड, आई एम राइटिंग इट हियर अगेन। स्लॉट ऑन स्लोपिंग सरफेस। कैसे क्वेश्चन में पता चला स्लॉट है स्लोपिंग सरफेस में? देखो ये स्लोपिंग सरफेस है, क्वेश्चन देखो, दिस इज स्लोपिंग सरफेस और इस सरफेस में यहाँ पे देखो एक स्लॉट दिख रहा है। अब ये स्लॉट कैसे भी शेप का हो सकता है, ये स्लॉट यहाँ पे है, तो ये कैसे ड्रॉ करेंगे? ओके, सो व्हाट विल वी डू नाउ? हियर आल्सो वी हैव एंगल, सी दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री। एक तो ये तरीका है कि एंगल दिया है, दूसरा ये तरीका होता था कि दे शुड हैव गिवन अस कि दिस डायमेंशन इज दिस मच। सी इफ दे वुड हैव गिवन अस दैट दिस डायमेंशन इज से कितना है 30 40 50, ये 50 है, तो फिर हम ये अभी जो प्रोसीजर करने वाले हैं, ये प्रोसीजर हम करने वाले हैं अभी, ये करने की जरूरत नहीं पड़ती थी इफ दे वुड हैव गिवन दैट डायमेंशन, बट दे हैव नॉट गिवन द डायमेंशन, व्हाट दे हैव गिवन इज एंगल. So since they have given us the angle, what will we do? We'll draw it like this. This is how much? No, we are not interested in this dimension. This is dimension 70 and like this. Now here 20, till here is 20 and till here is 20. The remaining thing I will erase. Okay, this is 20 from this side and 20 from this side. Now from this point, we have to draw a line at 30 degree. Okay, so how will we draw? We will draw a line at 30 degree. ये एंगल कितना है? 30. Similarly here also draw a line at 30 degree. This angle is how much? 30 degree. This angle is how much? 30 degree. Okay, and how much is this distance? You can see in the question 15. Distance is 15. So 15 distance पे you draw a vertical line. 15 distance. So this is say 15 somewhere here. And then this is done now, like this and like this. Okay, ये थोड़ा एक्सिगरेट हो गया यहाँ पे, डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे डिस्टेंस देखो ये कम हो गया डिस्टेंस, एक्चुअली में थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, जो टू द स्केल ड्रॉ नहीं किया इसलिए. ठीक है, सो इज दिस क्लियर नाउ? दिस इज व्हाट यू हैव टू ड्रॉ एंड हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस इज 70. जी 20 plus 20 40 plus 30 70. सो 70 है तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? 35. करेक्ट, ये कितना होगा? 35. I hope this is clear to all of you now. So now from this point, if I name it as A, this point if I name it as B, and this point if I name it as C. Okay, AB and AC are the distances that we are going to need. AB and AC. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? Yes sir. Okay, now how to draw the slot on the sloping surface? Now once we get this distance, see this distance, I will name this distance as something so that every time I don't have to call this distance. Let this distance be capital A. So this distance is also capital A. So once this distance is known, what will we do? We'll join this line like this. Join this line like this, and midpoint of this and midpoint of this we will join. Okay, and midpoint of this will join to this, and from here see you will get a triangle like this. I am erasing this and redrawing it. Okay, फिर से ध्यान दो मैंने ट्रायंगल बनाया कैसे, मैं पूरा इरेज करता हूँ और फिर से ड्रॉ करता हूँ. What is the midpoint of this? ये midpoint है. What is the midpoint of this line? Somewhere here. Okay, so this is the midpoint to midpoint joining, and from here if I want to draw a vertical line, I will draw like this. This will also come and join the midpoint. Is it okay?
Now this also will join, this also will join like this, and now this point we will join to this. So this is the triangle now that we have formed. Now if you see this triangle, this bottom portion I don't need, so I will erase this. मैं पहले भी ड्रॉ नहीं करता था, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ किया, so I don't need this bottom portion, I will erase this, तो confusion कम हो जाएगा. Okay, so every time whenever you have to draw slot, you will have to draw it like this, a triangle. Now on this triangle, see now this triangle, what are the distances? We will see in the top view. See from this point, which one? This one. From this point of line to this line, which is it? It is this 35, correct? 35. मतलब ये डिस्टेंस कितना है? 35. यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है? This is 35, correct? Where is it given? This is given in the question. And in this, how much is this distance? ये slot का distance कितना distance पे slot? 15. See 15 from where to where? This is 15. Understand that this is 15. This is 15. So what I will do now is, once I get this distance of 15, मैं इसको फिर से I will draw like this. A plane. I will draw a plane. So if I want, I can draw here also like this. Now this slot has to be drawn on this plane. Slot has to be drawn on this plane. So how will we draw this now? In order to draw this, we will on this line, on see this point. Okay, this is the point from where the slot is starting, from this point. Okay, this point, and now we have to obtain this point on this. इस पॉइंट को यहाँ पे लाना है, तो वो पॉइंट कहाँ पे बताओ मुझे? That point is this point. What is this distance? Say what is this distance? That is 15. 15, correct? And what is this distance that we have found? That will calculate. A distance, correct? And from A, that is this point, to going to this point. Let me say this is B. Let me say this is B. Going from A to B, going from not A, we call this as suppose P and Q, P and Q. Going from P to Q, going from P to Q at a distance of 15 mm. 15 which distance? Not this, not this. 15 is this 15. This is the point. Okay, so on this point, so if I join this here, this is the point. See, this is the point where I have shown the mark. Which is this point? This point is this A point, A. Got it? This is the point A. Now you know how to obtain B and C. This is B, this is C, and then remaining is very easy. You just have to join it. So from this point to B and from this point to C. Done. Sir, So that we- A to B and B to C will draw by compass, right? Yes, compass, correct, compass. A to B and B to C by compass. And then you can also join this. This also can be joined. So why we have done all this? We have done all this just to obtain this point. Which point? That point is this point. Look in the question, this point. We want this point because the slot starts from this point. देखो इसके ऊपर slot है क्या? इसके ऊपर slot नहीं है. Slot इस point से start होता है. ये point. So this point is which point? See, A point. Is A point, which is A. This one is A. This one is A. Here also, in our drawing, in this drawing, this point is A. So to obtain this point, we have to construct this thing. Once we get this, then B and C, obtain this B and C, and then just join it. And after joining B and C, you just have to complete the remaining procedure. Draw a vertical line from here. Sorry, vertical line from here, and draw a line like this, and draw a line like this. That is done. सर मतलब जो हमें अगर सी मिल गया सर, तो हाँ. जो हम बॉक्स ड्रॉ करते हैं सर, उसको पैरेलल में हम फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे. Correct. और फिर
फिर वो बी सी का डिस्टेंस लेके आर्क कट करेंगे और फिर ज्वाइन करेंगे लाइन। हो गया ना फिर मतलब यही है। यस यस यस, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है सम का कंप्लीट करना, बी टू सी और ए, ये तो इजी है। गलती कहाँ पे होता है? गलती ये जो लाइन ड्रॉ करना है हमको, इस लाइन में गलती होता है। So see this line which I am showing by the cursor is parallel to this line. Front view देखो इसका, front view इस line के बाहर कुछ है क्या? There is nothing above this line. There is nothing above this line. So everything has to be on this line only, on this line. So which is that line? This PQ is that line. So we have drawn this line. This line, see the cursor. This line is parallel to this outside line. So here we have to obtain this line first. Now once we obtain this line, we should know this distance also. This distance. Look in the question. This distance. This point. So that point is here, and then we have projected that point A here. Once we get the position of A, obtaining B and C is easy, and then the remaining thing can be completed. Clear to all of you? Yes, sir. Understood. Clear, sir. Okay, so you practice it today itself. At least इतना पोर्शन प्रैक्टिस करो, ये 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इतना प्रैक्टिस करो, तो ये जो भी मैंने बताया ये क्लियर हो जाएगा तुमको। अगर नहीं हुआ होगा तो भी क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हुआ है तो भूलोगे नहीं तुम, ये करके देखोगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।